नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का मैं विकास वर्णकार इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसरो के प्रमोशन मिशन PSLV C52 EOS-04 मिशन के सीधे प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। आज 14 फरवरी 2022 को PSLV C52 EOS-04 का प्रमोशन किया जा रहा है। यह भारतीय मानक समय के अनुसार प्रातः 5:59 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम प्रमोशन मंच से किया जा रहा है। इस वर्ष 2022 का यह प्रथम प्रमोशन है। Good morning and hearty welcome to all the viewers. I am Madhuri, welcoming you to the launch event of PSLV C52 EOS-04 mission being telecast live on DD National from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, Andhra Pradesh, the spaceport of India. The launch will take place today, the 14th of February 2022 at 5:59 hours Indian Standard Time from the first launch pad. The live telecast is also available on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. MCC to control event number 431 completed. भारत के -27 मिनट भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट PSLV C52 की यह 54वीं उड़ान है। You're right, Vikas. A new normal is in prevalence in SDSC SHAR and other centers of ISRO post-pandemic. The PSLV C52 will launch EOS-04 satellite weighing 1,713 kilograms at an altitude of 529 kilometers sun-synchronous orbit with a semi-major axis of 6,900 kilometers with 97.5 degrees inclination. It also carries 2 satellites as co-passengers. The PSLV C52 being launched today is the PSLV XL version of the reliable and versatile PSLV. It has 6 strap-ons along with the core motor. प्रमोशन की उल्टी गिनती करीब 25 घंटे पहले शुरू हो चुकी है। As we wait for the launch, let me briefly tell you about the flight sequence which will be followed today. The reaction control thrusters are fired 2.8 seconds before the launch. At liftoff, that is T0, the core stage or the first stage and 4 groundlet strap-ons will be ignited. The strap-ons will continue to burn for about 70 seconds and then they will be separated from the launch vehicle. Meanwhile, the airlit strap-ons begin to operate 25 seconds after the liftoff. The ULLAGE rocket will fire to give the necessary inertia to the second stage for ignition while the first stage is burning with tail-off thrust. By the time the first stage completes its operation, the launch vehicle would have reached 69 kilometers altitude and would be flying forward at a velocity close to 1.8 kilometers per second relative to Earth. At 109 seconds flight elapsed time, the PS1 will separate and PS2 is ignited 200 milliseconds later. Crossing the dense atmosphere marks 2 flight events: the jettisoning of the heat shield and the initiation of closed-loop guidance. The total burn time of the second stage is 153 seconds and it is then separated from the ongoing launch vehicle. Then the third stage, called the HPS-3 stage, is ignited. Following 124 seconds burn time, the PS3 is burnt out but continues to coast along. This stage separates another 106 seconds later. PS4 stage is ignited 10 seconds later from the separation of PS3. During the burn regime of PSLV fourth stage, the orbital parameters for the injection of prime satellite
EOS-04 are achieved. About 37 seconds after the stage shutdown, EOS-04 is separated. 55 seconds later, the first co-passenger satellite InspireSat is separated. Another 15 seconds later into the mission, the INS-2TD will be injected into its orbit. Minus 17 minutes. Timing to control, timing confirms external hold mode. EOS-4 is configured for launch phase and cleared for PSLV C52 EOS-04 mission. Mission Director Roger. Timing Roger. TC Director confirms readiness of ISRO TTC network for supporting PSLV C52 EOS-04 INS-2TD InspireSat on mission. Mission Director Roger. Forwarded to Mission Director. Range is ready for PSLV C52 EOS-04 launch. Mission Director Roger. Control to VLCC-1 and LCC-1. Please note, timing confirmed, external hold mode. VLCC Roger. TCTC, data loggers are on at Sharon and Shatu. Minus 16 minutes. This is Mission Director. Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C52 EOS-04 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and ISRO network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C52 EOS-04 mission at 5:59 hours IST today, that is 14th of February 2022. Control Roger. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. This is Vehicle Director. Based on the authorization from Mission Director, Vehicle Director authorizes to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV C52 EOS-04 mission at 5:59 hours IST today, 14th February. SDA servers activated, mission computers confirm reception of SHAR-1 and SHAR-2 data. जैसा कि अभी आपने सुना, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, व्हीकल डायरेक्टर, स्पेस क्राफ्ट डायरेक्टर ने अपनी सूचना मिशन डायरेक्टर को दे दी है। आइए आपको प्रमोशन रॉकेट के समाकलन का फिल्म दिखा रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं नोजल एंड सेगमेंट प्रथम चरण का, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, उसे प्रथम प्रमोशन मंच पर लाकर रख दिया गया है और अब इसे बहुत सावधानी पूर्वक अगले सेगमेंट्स लाकर, जैसे मिडिल सेगमेंट, हेड एंड सेगमेंट लाकर समाकलित किया जा रहा है। यह कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक किया जाता है। गुणवत्ता का इसमें खास ध्यान रखा जाता है। अब इसमें इग्नाइटर माउंट किया गया। अब आप देख पा रहे हैं यह स्ट्रैप ऑन बूस्टर 12 टन के नोदक के साथ, इसे भी प्रथम चरण के साथ संलग्न कर दिया गया। यह सब मोबाइल सर्विस टावर पर किया जाता है। अब SITVC टैंक और RCT टैंक को संलग्न किया जा रहा है। यह PS2 का विकास इंजन आप देख पा रहे हैं, जिनका पूर्ण परीक्षण IPRC महेंद्रगिरी में कर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लाया जाता है। जरूरी परीक्षण यहां पर किए जाते हैं तथा इसे MST ले जाकर PS1 स्टेज के ऊपर में संलग्न किया जाता है। The third and fourth stages are moved as an integrated module to the launch pad and integrated to the core motor. Minus 9 minutes.
Here the PSLV third and fourth stage being assembled to the second stage of PSLV. This is a visual of the clean room where the critical satellite systems are being tested for their functionality before being moved to the launch pad. The EOS-04 being assembled to the payload adapter in a clean room with controlled environment. The two co-passenger satellites InspireSat-1 and InSat-2 TD. Thereafter, the heat shield or the payload fairing is closed. The rocket is ready in all respects for the launch. The mobile service structure moves behind by about 200 meters at the time of launch. 3,600 tons heavy structure which translates to a wheel load of 120 tons. 42 satellite launches so far from the first launch pad. Meanwhile, let me tell the viewers about the launch vehicle configuration. This is the PSLV XL version with alternate solid and liquid stages. 139 tons of solid propellant as the main booster called the PS1. It consists of 5 segments, approximately 30 tons each, with 12.2 tons solid strap-on motors alongside the main booster. Core dia of 2.8 meters, thrust 4,800 kilonewtons, and action time of about 107 seconds approximately. The strap-on is of 1 meter diameter and develops a thrust of 719 kilonewtons. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41 tons propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. The Vikas engine develops 799 kilonewtons thrust. Third stage of the rocket is called HPS-3. Its height is 3.6 meters, diameter 2 meters, and uses 7.65 tons of propellant. अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह प्रमोचन का घटनाक्रम है। इसमें सर्वप्रथम PS1 कोर बूस्टर को T0 पर इग्नाइट किया जाएगा, साथ ही ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन तथा एयर लेड स्ट्रैप ऑन को इग्नाइट किया जाएगा। ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन पृथक किए जाएंगे 70 सेकंड पर तथा एयर लेड स्ट्रैप ऑन प्रमोचन से 92 सेकंड पर पृथक कर दिए जाएंगे। PS1 का पृथकीकरण 109.7 सेकंड पर होगा। इसके तुरंत बाद ही PS2 को प्रज्वलित किया जाएगा। तत्पश्चात ऊष्मा कवच का पृथकीकरण होगा 150 सेकंड पर और उसके बाद प्रमोचन यान क्लोज लूप गाइडेंस में चला जाएगा। इसके बाद PS2 सेपरेशन 262.5 सेकंड्स पर और उसके 1 सेकंड के बाद ही PS3 का प्रज्वलन होगा। PS3 का प्रज्वलन काल 124 सेकंड का है। सबसे पहले T-2.8 सेकंड्स पर RCT का प्रज्वलन होगा। उसके बाद T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन होगा। -55 seconds. अब हम प्रज्वलन से 50 सेकंड की दूरी पर -50 seconds. I urge the viewers to look intently at the TV screens for the -45 seconds. reaction control thrusters firing, which is scheduled to take place 3 seconds before -40 T0. seconds. -35 seconds. -30 seconds. -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C52।
आसमान की ऊंचाइयों पर जाता हुआ PSLV C52 Stage performance normal. क्षण है। गर्जना करता हुआ रॉकेट अपने उद्दिष्ट Airlift strap-on ignited. This marvelous liftoff and the PSLV first stage performance is according to the expectations for this mission. 4 strap-ons were ground-lit and 2 more strap-ons are air-lit. Cumulative Stage thrust when performance automotive normal. fire is close to 9,100 kilonewtons. Tower 1 main auto. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी घोषणा की, प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। Tower 2 main auto. इसका प्रज्वलन काल 109 सेकंड का होगा। Strap-on separated. ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन पृथक कर दिए गए हैं। We are about 1.5 minutes after the launch. The altitude is 48 Airlift kilometers. strap-on separated. The strap-ons have separated and the core stage will burn till 1 minute 50 seconds. इस क्रम में अगड़ा PS1 स्टेज को पृथक किया जाएगा तथा PS2 स्टेज का प्रज्वलन। Stage separated. Second stage engine started. The ignition of the second stage has been Plus 2 confirmed. minutes. Second stage performance normal. द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो चुका है तथा सामान्य निष्पादन कर रहा है। The second stage increases the velocity of ongoing launch vehicle from 1.9 kilometers per second to 4 kilometers per second. On your TV screens, the flight parameters Payload of bearing separated. mission. ऊष्मा कवच Route पृथक guidance हो गया। initiated. ऊष्मा कवच के पृथक होने के पश्चात अब यान क्लोज लूप गाइडेंस में है। इसका अर्थ है अब वो अपने सेंसर्स की मदद से अपनी Second stage performance normal. स्थिति की जानकारी ले अपने पथ का अनुसरण करेगा। Plus 3 minutes into the flight, and Shah station is continuing to track, and Trivandrum station has started to acquire the signal of launch vehicle flight. PS2 का प्रज्वलन काल 152 सेकंड का है। Second stage performance normal. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41-ton propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer, powered by the GG pump-fed Vikas engine that develops 799 kilonewtons thrust. You are able to see the ground trace? Second stage performance normal. Plus 4 minutes. द्वितीय चरण का सामान्य प्रदर्शन। Second stage separate. Third stage ignited. अभी आपने देखा द्वितीय चरण पृथक हो, तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. और यह पूरी तरह सामान्य है। तृतीय चरण का प्रज्वलन काल 124 सेकंड का होगा। उसके बाद कोस्टिंग फेज शुरू होगा जो कि 106 सेकंड का होगा। तृतीय चरण पूरी तरह सामान्य। The third stage has begun its action. This will continue to burn for about 124 seconds. That is a little over 2 minutes.
In this duration, it will add 211 kilometers to the altitude and increase the relative velocity from 4 to 6 kilometers per second for the mission requirements. Altitude currently 300 kilometers. PS3 तृतीय चरण है PSLV का। यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें कुल 7.6 टन का HTPB पर आधारित ठोस नोदक होता है। इस चरण का व्यास 2 मीटर का होता है तथा लंबाई 3.6 मीटर की होती है। इसमें 24 टन का निर्वात प्रणोद उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसका कार्यकाल 124 सेकंड का होगा और उसके बाद कोस्टिंग फेज शुरू हो जाएगा। कोस्टिंग फेज में प्राप्त संवेग के साथ स्वतः ही यान करीब 100 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। थर्ड स्टेज एक्शन कंप्लीटेड। तृतीय चरण का जलन काल समाप्त होता हुआ और अब यह बंद हो गया है। कोस्टिंग फेज शुरू। व्हीकल इन कोस्टिंग फेज। Now, though the third stage has completed its action, it continues to coast along with the fourth stage and the spacecraft. It will do so for the next 1 minute 47 seconds, during which time there is 91 kilometers gain in the altitude as the launch vehicle loses velocity trivially. The coast phase exists while the rocket is 950 to 1500 kilometers downrange from the launch port. Shar and Trivandrum stations still tracking. Vehicle performance normal. There is no thrust, however, the launch vehicle continues to be controlled. For the coast phase control, the stage is equipped with 2 clusters of 50 Newton thrusters mounted on the outer diameter of the propulsion bay ring. They derive the propellants from the main propellant tank itself. A pair of these thrusters are also used for the roll control of PS3 and PS4 combined during the PS3 stage operation. Plus 8 minutes. अब हम प्रमोचन से 480 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 5.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऊंचाई 451 किलोमीटर। कोस्टिंग फेज जारी है। थर्ड स्टेज सेपरेटेड। तृतीय चरण पृथक कर दिया गया है। इसके 9 सेकंड बाद चतुर्थ चरण का प्रज्वलन। चतुर्थ चरण का प्रज्वलन सामान्य। चतुर्थ चरण 515 सेकंड का प्रज्वलन काल है। परफॉर्मेंस नॉर्मल। चतुर्थ चरण भी सामान्य निष्पादन करता हुआ। यह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उसकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करने की स्थिति में लाएगा। The fourth stage is presently operating and developing intended thrust. Fourth stage performance normal. The burn time for the fourth stage for the present mission is 8 minutes 35 seconds. It operates till the orbital parameters for injection of satellite are achieved. This stage is a liquid stage which is 2.5 meters in height, 1.34 meters in diameter and 2.5 tons of propellant loading. Monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen as oxidizer. Trivandrum and Mauritius stations tracking presently. Plus 10 minutes. This stage is pressure fed. That means the pressurized gases create the necessary high pressure for the propellant
to enter the combustion chamber. Having fewer parts, this is simpler and lighter than its pump-fed counterpart for similar thrust. The boost phase control. Performance normal. The boost phase control of the fourth stage is achieved by two-plane gimballing of both the engines. By differential deflection of the engines, the roll control is also achieved. यहाँ मिशन नियंत्रण कक्ष में हम देख पा रहे हैं चतुर्थ चरण अपने अनुमानित पथ को पूरी तरह अनुसरण करता हुआ Plus 11 minutes. PSLV चतुर्थ चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन ईंधन के रूप में तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कुल 2.5 टन का ईंधन होता है तथा दाब भरित इंजन के द्वारा यह 7.33 किलो न्यूटन का निर्वात प्रणोद उत्पन्न करता है। इसमें ऐसे दो इंजन्स लगे होते हैं जिसका मतलब यह 14.6 किलो न्यूटन का निर्वात प्रणोद उत्पन्न कर सकता है। इस समय सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन करते हुए इस काल के अंत तक उपग्रह के अंतःक्षेपण की स्थिति प्राप्त कर ली जाएगी तथा PS4 को बंद कर दिया जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं यान पूरी तरह अनुमानित पथ को अनुसरण करता हुआ। 4 stage performance normal. चतुर्थ चरण का प्रदर्शन पूरी तरह सामान्य। सापेक्ष गति 6.53 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 541 किलोमीटर। Plus 13 minutes. Plus 15 minutes. दूसरा सहयात्री उपग्रह इंस्पायर सैट-1 परफॉर्मेंस नॉर्मल एक छात्र उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तथा लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स कोलोराडो विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से बनाया गया है। चतुर्थ चरण का प्रदर्शन पूरी तरह सामान्य। The prime satellite taking light in this mission is the EOS-04, which is a radar imaging satellite designed to provide high-quality images under all weather conditions for applications such as agriculture, forestry and plantation, flood mapping, soil moisture and hydrology. Collecting Earth observation data in C-band, it complements or supplements the data from a group of remote sensing satellites like ResourceSat, Cartosat Plus series 16 minutes. and RISAT-2B series. The hallmark of Indian space program is the application-oriented focus and the benefits that have accrued to the country through these 4 programs. stage performance normal. The co-passenger satellites are INS-2TD, which is a technology demonstrator satellite from ISRO. It is a precursor to the India-Bhutan joint satellite INS-2B. Having a thermal imaging camera as its payload, the satellite benefits the assessment of land surface temperature, water surface temperature of the wetlands and lakes, delineation of vegetation, and thermal inertia. India and Bhutan have been engaged in space cooperation ever since the launch of South Asia satellite in May 2017. The South Asia satellite was launched by India as a gift to the countries in South Asia. 17 minutes. Now the Satellite injection conditions are achieved.
We are awaiting the satellite placement into the intended orbit. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन समाप्त। अंतःक्षेपण की परिस्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। किसी भी क्षण EOS-04 को उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित किया जाएगा। EOS-04 satellite separated. और यह हर्ष का पल आ गया है। EOS-04 को उसके उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित कर दिया गया है। Major milestone of the mission has been achieved. The EOS-04 satellite has been injected into its orbit. Mission completed. Handing over to Mission Director. PSLV C52 has injected EOS-04 primary satellite and 2 other passenger spacecrafts into the desired orbit. PSLV C52 EOS-04 mission is fully accomplished. The mission of PSLV C52 EOS-04 has been successfully accomplished. The primary satellite EOS-04 has been put in a very precise orbit by the PSLV C52, and along with that the co-passenger satellites INS-2D and INSPIRE-SAT also has been placed in the right orbit. So congratulations to everybody who worked for this mission.